Student, welcome to the Easy Learning. Today we're going to study MBA 4th semester Emerging Technology in a Global Business Environment subject. We're going to study the Unit 2 Emerging Technologies as a Drivers of a Global Business, and we're going to cover the topic Artificial Intelligence. Student, when we talk about artificial intelligence, what are the things that come in our mind? A machine that behave like a human, a machine that made a life of a human being easier, a machine which can be used in a Google search, Alexa, self-driving cars. So these are the example of the artificial intelligence application that are widely used nowadays. So artificial intelligence is a stimulation of the human intelligence processes by a machine, especially a computer system. Specific application of AI include the expert system, natural language processing, speech recognition, and machine version. So student, artificial intelligence are nowadays are widely used in the many application. It is in a form where the computer, the science which is building a smart machine which able to perform like a human being or like a human intelligence. Artificial intelligence is an intelligence demonstrated by a machine as opposed to इंटेलिजेंस ऑफ ए ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स. जैसा कि आप देखते होंगे, हम जब गूगल सर्च करते हैं, देयर विल लॉट ऑफ थिंग्स फीचर्स आर बीइंग गिविंग नाउ डेज इन द गूगल सर्च. जैसे आपके पास लेंस का होता है, आप कोई भी फ़ोटो क्लिक कर देते हो तो द सेम थिंग दैट क्लिक करने पे जो भी आपने फ़ोटो क्लिक की, सेम इंफॉर्मेशन दैट कैन बी शोन इमीडिएटली ऑन अ गूगल सर्च. देन वी हैव अ एलेक्सा. एलेक्सा में क्या है कि इट्स अ काइंड ऑफ वॉइस रिकग्निशन. आपको क्या हो रहा है कि मैं जो भी उसे कमांड दे रही हूँ वो कमांड को लेता है और जो भी आपने कमांड इनपुट दिया इट गिव्स अ फॉर्म ऑफ आउटपुट. और इट इज़ वेरी 100% correct search you will find in that. Then nowadays in a self-driving cars features were coming, they were also using the artificial intelligence. Then the example tasks in which this is done include speech recognition, computer version, translation between the languages, OTT or recommendation, Google search and etc. तो बहुत सारे एप्लीकेशन nowadays what happening, बहुत सारे एप्लीकेशन बहुत सारी फील्ड में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ देख रहे हैं. आजकल क्या हो रहा है कि यू कैन सी द even the mopping you can done by the artificial intelligence. They were providing a vacuum cleaner that is in a also working in the application of the artificial intelligence. So we have so many areas where the artificial intelligence are being implementing और लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं क्योंकि एक तरह का ह्यूमन बीइंग की कहीं ना कहीं से बहुत तरह की हेल्प भी मिल जा रही है. आपको फिजिकली भी बहुत हेल्प मिल जा रही है. आप क्या करते हैं, झाड़ू और मॉपिंग यू आर डूइंग ऑफ योर ओन, तो क्या होता है कि ये जो वैक्यूम क्लीनर है आप उसको जस्ट ऑन करके छोड़ दीजिए, वो धीरे 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 वॉट एवर द डस्ट और काइंड ऑफ रैपर्स और आता है तो इट विल उसे वो खींच लेता है. तो दिस इज़ अ वेरी नाइस एग्जाम्पल. ये इसलिए नहीं कि टू मेक अ ईजियर बट ऑल्सो आजकल बहुत ही फास्ट लाइफ हो गई है तो पीपल डोंट हैव टाइम. तो एक तरह का वो जो आपका टाइम जो इधर कुछ चीज़ों में होम चीज़ों में जो इन्वेस्ट हो रहे थे वो टाइम भी यहाँ पे बच रहा है. सो दीज आर द थिंग्स विच आर वाइडली इन यूज्ड इन through the application of the artificial intelligence. The goal of AI is to provide a software that can reason on an input and explain on an output. जैसे कि मैंने आपको बताया एलेक्सा का कि हम जो भी इनपुट उसको वॉइस कमांड दे रहे हैं इट विल कम इन अ दैट कैन बी एक्सप्लेन इन अ फॉर्म ऑफ आउटपुट. यानी जो भी उसमें अगर आपने कहा कि मुझे आप ये सम सॉन्ग आप उसे कहते हो प्ले करने को, जो भी अगर सॉन्ग जो सेम सॉन्ग इफ शी इज़ प्लेइंग तो दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन अ फॉर्म ऑफ आउटपुट.
Then AI application include the advanced web search engine recommendation system, understanding human speech, self-driving cars. एआई में क्या है, जैसे मैंने बताया कि गूगल वेब सर्च में काफ़ी रिकमेंडेशन सिस्टम में यूज़ होता है, आपकी ओटीटी रिकमेंडेशन में होता है। अब कई बार आप जाते हैं नेटफ्लिक्स पे, तो कुछ वीडियोस होते हैं जो आपको रिकमेंडेशन के फॉर्म पे आ रहे होते हैं। यू कैन सी इट्स देयर में सो मैनी, जैसे कि अगर आपका जो भी लाइक है, यानी आपको एक्शन पसंद है, एक्शन थ्रिलर पसंद है, आपको कॉमेडी पसंद है, तो ऑन दैट बेसिस जो आपने ऑलरेडी पास्ट में देख रखा है मूवीज, यानी आपका जैसे आपका टेस्ट है कि आपको एक्शन मूवीज में, तो आपने कई बार सर्च करके एक्शन मूवीज देखी, तो अब क्या कर रहे हैं कि ओटीटी यानी यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एप्लीकेशन की हेल्प से ओटीटी क्या कर रहा है कि रिकमेंडेशन फॉर्म कर दे रहा है कि अरे इनको तो एक्शन मूवीज पसंद है, तो दे विल स्टार्ट गिविंग यू द रिकमेंडेशन ऑफ द एक्शन मूवीज, और साथ ही साथ दे कैन शो दैट द परसेंटेज दैट लाइक योर 97% दैट यू लाइक दिस मूवी, 80% अगर आप किसी भी मूवी को सर्च करते हो इसमें शो कर रहा होता है 80% आप पसंद कर रहे हो. These are the recommendation that are working on a application of the artificial intelligence. Now, understanding the human speech, self-driving cars. Self-driving cars, बहुत सारी features self-driving cars में आ रहे हैं. These are also working on a artificial intelligent applications. Then AI can be categorized as a weak or a strong. So weak artificial intelligence, which are also known as a narrow AI, it is designed and trained to complete a specific task. Whereas the strong AI is also known as a artificial general intelligence, can replicate the cognitive abilities of the human brain. Aspect of artificial intelligence. So artificial intelligence programming focuses on a cognitive skill. The first one is learning. This aspect of AI programming focuses on acquiring the data and creating a rules for how to turn it into a actionable information. The rules, which is called a algorithm, it provide a computing device with a step-by-step instruction for how to complete a specific task. So in a learning, there were a certain rule has been formed which can be in a form of algorithm. वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसको जो भी उसको टास्क दिया जा रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप उसे इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है टू कंप्लीट द स्पेसिफिक टास्क. देन वी हैव अ रीजनिंग. दिस एस्पेक्ट ऑफ एआई प्रोग्रामिंग फोकसेस ऑन चूजिंग द राइट एल्गोरिथम टू रीच अ डिजायर्ड आउटकम. यानी जो भी आपकी रिक्वायर्ड है, आपको वैसा जो भी आपको चाहिए, ऑन दैट बेसिस एआई क्या कर रहा है, प्रोग्रामिंग एक रिक्वायर्ड एल्गोरिथम, यानी आपको चाहिए कि मुझे एलेक्सा को बोलना है कि मुझे आज अपना अलार्म फिट करना है, तो अब वो अलार्म फिट करने के लिए शी इज़ नॉट गोइंग टू टेक द सेम एग्जाम्पल जब मैंने उसको कहा गाने के लिए, तो देयर वर द 2 डिफरेंट टास्क. तो यहाँ क्या कर रहा है, एक राइट एल्गोरिथम इज बीइंग यूज्ड. इफ आई एम आस्किंग दैट Alexa, I want to set an alarm for tomorrow morning, or there's a different algorithm for the Alexa play a music, the specific song. Then we have a self correction. This aspect of AI programming is designed to continually fine tune algorithm and ensure they provide the most accurate result possible. इसमें क्या है कि इसमें फाइन ट्यून एल्गोरिथम को हम यूज़ कर रहे हैं, दैट कैन बी यूज बाय द मोर एक्यूरेट, जो भी हम प्रोग्रामिंग यूज़ करें, डिज़ाइन जो भी कंटिन्यूसली हम करें, दैट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ फाइन ट्यून एल्गोरिथम टू इंश्योर दैट जो एकदम एक्यूरेट रिजल्ट दैट पॉसिबली कम टू in action. Then the creativity. This aspect of AI uses a neural network, rule-based system, statistical method, and other AI technique to generate a new image, new text, and new music, and the new ideas. So these are the aspect of the AI that are being
used which are focuses on the cognitive skills. Type of artificial intelligence. The first one is reactive machines. तो reactive machines में क्या है, इसमें जो AI सिस्टम होता है इसमें कोई भी मेमोरी नहीं होता है एंड दे आर द टास्क स्पेसिफिक. इन 1990s में IBM ने चेस प्रोग्राम बनाया विच वॉज इन नेम ऑफ डीप ब्लू. तो डीप ब्लू वॉज मेड to have a chess competition with a on that time 1990s chess champion Mr. Gary Kasparov, or there was a match between them, and in that match the Deep Blue won from the on that time world champion. तो उसमें क्या हुआ कि they have played a 6 matches जिसमें क्या था, 3 were the draw and the one match was won by Gary Kasparov, and the 2 were won by the IBM Deep Blue. So the finally the Deep Blue was won that match. So as I already told, in reactive machines there is a no memory. तो मेमोरी नहीं है. तो क्या था कि जो डीप ब्लू था वो इट ओनली आइडेंटिफाई द चेस बोर्ड और एंड कैन मेक अ प्रिडिक्शन, बट इट डज नॉट हैव मेमोरी एज आई ऑलरेडी टोल्ड. तो इट कैन नॉट यूज द पास्ट एक्सपीरियंस that to inform the future ones. Now the limited memory. This is another type of artificial intelligence. In a limited memory system, इसमें क्या होता है, इसमें they have a memory जो क्या करता है, they use the past experience to inform the future decision. So some of the decision making function in self-driving cars, they are designing in this way nowadays. So student, what is happening in the self-driving cars, like they were using उसमें ये है कि they were using the patterns, जो डेवलपर्स हैं they were using the self-driving cars with the क्या करते हैं, उसमें vast amount of data को वो लोग क्या करते हैं, feed करते हैं along with the machine learning and neural network. तो these data can be in a form of a image recognition system. तो न्यूरल नेटवर्क यहाँ पे क्या मतलब, ये क्या करता है कि वो एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है विच आर इन डेटा और विच आर फीड टू द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. तो जो इसमें हम डेटा हम इसमें डाल रहे हैं, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ अ इमेज फ्रॉम द कैमरास, और इट कैन बी जो न्यूरल नेटवर्क लर्न्स जो आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं, इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ अ ट्रैफिक लाइट और ट्री और आपका स्ट्रीट साइन हो गया या अदर पार्ट ऑफ एनी ड्राइविंग एनवायरनमेंट. तो राइट नाउ व्हाट इज द गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार प्रोजेक्ट जो है वह है वेमो. इसमें क्या है कि दे हैव अ मिक्स सेंसर्स बीन यूजेस. इसमें क्या कर रहे हैं कि गूगल वेमो में जो थिंग्स दैट वी आर यूजिंग, पहला तो ये है कि ड्राइवर सेट ऑफ डेस्टिनेशन है, एक तरह का सॉफ्टवेयर दे वे यूजिंग टू कैलकुलेट द रूट. दूसरा क्या है कि दे हैव अ लिडार सेंशन मॉनिटर. वो क्या करते हैं, 6 मीटर रेंज, क्या कहते हैं, इट अ काइंड ऑफ अ सेंसर दे वे मेकिंग. उसमें क्या होता है, 6 मीटर रेंज अराउंड द कार होता है. हमारा फिर हो गया हमारा सेंसर ऑफ अ लेफ्ट रियर व्हील मॉनिटर साइडवाइज मूवमेंट टू डिटेक्ट द कार पोजीशन. और फिर है हमारा अरेडार सिस्टम विच इज़ इन अ फ्रंट एंड द रियर बम्पर. वो बम्पर पे हम लगाया करते हैं. देन वी हैव अ AI सॉफ्टवेयर सिस्टम जो कि बाकी जो सेंसर है वो कलेक्ट इनपुट फ्रॉम द गूगल स्ट्रीट व्यू. उसमें क्या होता है, वीडियो कैमरा उसमें लगा होता है. इसी तरह और भी इसमें फंक्शनैलिटी है, जैसे AI स्टिमुलेट और हमारा कार सॉफ्टवेयर कंसल्ट जो कि हम गूगल मैप के फॉर्म में वी आर यूजिंग इट. So these were the thing we'll be using in the self-driving system, and you can see these are so vast and so technology has been so changing day by day. तो मतलब you can just see मतलब it is a human effort
इफ यू जैसे आप अगर ड्राइव कर रहे हो, यू हैव टू चेक सो मैनी सिनेरियोज हैं। तो ये जो आप अपने दिमाग से अगर सोचो तो देवर, अगर हम ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स को, इन सिनेरियोज को किस वे में फीड किया जा रहा है, यू कैन जस्ट सी दैट हाउ मैनी टेक्नोलॉजी इज बीन you know vast nowadays, and they are so much implemented, or artificial intelligence have brought all the changes into the environment. Then we have the third type of artificial intelligence, that is a theory of mind. So theory of mind is a psychological term. When applied to a AI, it means the system would have to the social intelligence to understand the emotions. So this type of AI will be able to infer the human intentions and predict the behavior. A necessary skill for an AI system to become a integral member of the human terms. तो हमारा theory of mind, it is kind of like इसमें ये है कि theory of mind is a concept where the people have a thought, feeling and emotions that affect and their behavior. तो हमारे फ्यूचर एआई सिस्टम में हम यही सब पढ़ने वाले और समझने वाले हैं कि हाउ द एवरीवन, लाइक द पीपल एंड द एआई ऑब्जेक्ट्स, हैव अ thought and feeling. The future AI system must know how to adjust their behavior to be able to work among us. Then we have the fourth type of in artificial intelligence, that is a self-awareness. Well, in this category, the AI system have a sense of self, which give them a consciousness. The machine with the self-awareness understanding their own current situation, and this type of AI does not exist here yet. तो self-awareness AI system is still working, और ऐसा माना जाता है कि there will be a machine which are not only aware of emotions and mental state of others but also their own. ठीक है, when the self aware is achieved, we would have the AI that have a human level of consciousness and the equal human intelligence, which is same need, desire and emotions. तो ये बहुत ही हाई thought है, और the the technology is been implementing in this, and future there's a prediction that self awareness you know AI system will come, जो कि machine जो खुद का self aware of himself, like that machine can understand all the kind of intelligence that the human able to get. So these are the four types of artificial intelligence application of a AI. So artificial intelligence had made its way in a wide variety of market. Now we see that where are the areas in a market that we are been using the artificial intelligence. तो हमारा पहला ये हो गया, गूगल मैप हो गया, गूगल सर्च हो गया, देन फेस डिटेक्शंस एंड रिकग्निशन हो गया, आपके मोबाइल फ़ोन में भी फेस डिटेक्शन एंड रिकग्निशन software has been there. Self-driving cars, as I already told you, the self-driving cars which is having consist of the various datas already feeded into that, or kind of a many neural method or machine learning algorithm are being used. They were already feeded the all kind of images, videos, so that already these information already feeded into the memories, so that the self-driving cars can automatically operate. Then we have a chatbots हमारा आजकल बहुत सारे हमारे मतलब ई कॉमर्स साइट्स हैं, they were started using chatbot as a customer service. आप जाइए, यू विल गेट अ चैटबॉट देयर, और आप यू कैन जस्ट आस्क क्वेश्चंस, और दे वर ऑलरेडी फीडेड answers and questions in the chatbot. Diksha is also one of the example from the ISCTC chatbot. Then we have a OTT recommendation. OTT recommendations में क्या है कि बहुत हमारे जो OTT
साइट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हर यूजर्स के लिए रिकमेंडेशन होता है जैसा एज पर देयर टेस्ट, like they like action movies, they like thriller movies, they like anime uh, comedy movies. So on as per their previous data, जैसे उन्होंने अपना previous उन्होंने movies देखी है, on that recommendation, like उन्हें क्या पसंद है users को, उनके basis पे they were recommending the movies or any videos or series like that. Then we have e-payment facilities, रिकमेंडेशन एल्गोरिथम, फिर हमारा डिजिटल असिस्टेंट हो गया, हमारा गूगल असिस्टेंट हो गया. अब मोबाइल पे वी हैव अ गूगल असिस्टेंट, वी हैव अ एलेक्सा, वी हैव अ सीरी इन आईफोन. These are the digital assistant we know. Then we have a social media sites. Then we have the games which are on artificial intelligence applications. Then online ad networks. Then banking and finance, we have a smart home devices. स्मार्ट होम डिवाइसेस में हमारा हमारा बहुत सारी चीज़ है. रोबोटिक हमारा वैक्यूम क्लीनर्स है, रोबोटिक हमारा मशीन्स आ गए हैं, लाइक वेंडिंग मशीन्स भी हैं रोबोटिक. अब आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के आते हैं रोबोटिक वेटर्स यूज़ कर रहे हैं. तो these are also working on the same platform, like AI applications are there. Then हमारा स्मार्ट कीबोर्ड ऐप हो गया, हमारा स्मार्ट स्पीकर हो गया. तो there were lot of application where the artificial intelligence has been using. The machine learning versus a deep learning. So machine learning is a subset of a AI technique which uses statistical method to enable a machine to improve with the experience. तो हमारा जो मशीन लर्निंग है वो इट इज़ अ सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि फोकस कर रहा है एल्गोरिथम डेवलपमेंट करने का. और हमारा जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है उन्हें enable computer to learn and make a prediction or decision without being explicitly programmed. तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ट्रेनिंग एल्गोरिथम on a basis of data set are being identify the pattern and their relationship, and they're using those pattern to make a prediction or decision about the new data. और then we have a डीप लर्निंग. डीप लर्निंग क्या है, ये हमारा सबसेट है मशीन लर्निंग का, विच मेक अ कंप्यूटेशन ऑफ अ मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क फिजिबल. डीप लर्निंग में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये सबसेट, जैसा है मैंने बताया, सबसेट है मशीन लर्निंग का जो कि न्यूरल नेटवर्क को मल्टीपल लेयर में मतलब एनालाइज कर रहा है, दैट कॉम्प्लेक्स पैटर्न है तो, और उनके रिलेशनशिप विद द डेटा. It inspired by the structure and the function of the human brain, and it became successful in the variety of tasks such as image recognition, natural language processing, and speech recognition. Deep learning में क्या है कि we are trained by using the large amount of data and the algorithm that are being to learn and improve over the time, becoming more accurate as they process more data, and this make them well suited to a complex real world problem and enable them to learn and adapt to the new situations. Now we can see the differences between the machine learning and the deep learning. तो जो data is being required here in a deep learning, we needed a large amount of data, और वही machine learning में we can train or lesser data. Then accuracy point of view, the factor we see that it provides a high accuracy, whereas in the machine learning it gives a lesser accuracy. Now the factor in a training time, the deep learning takes a longer to the train, whereas as a machine learning it takes a less time to train. Now hardware dependency, the deep learning requires a GPU to train properly, and machine learning train on a CPU. Now hyperparameter tuning, we have a
in a deep learning can be tuned in a various different ways, whereas the machine learning have a limited tuning capabilities. Machine learning. The Arthur Samuel in 1959 defined a machine learning. The machine learning enables a machine to automatically learn from a data, improves performance from the experience, and predict things without being explicitly programmed. तो हमारा जो मशीन लर्निंग है यहाँ पे एल्गोरिथम आर बीइंग बिल्ड ऑन अ बेसिस ऑफ अ मॉडल विच इज़ कंसिस्ट ऑफ अ सैम्पल डेटा. इस सैम्पल डेटा को हम ट्रेनिंग डेटा भी कहते हैं. to in order to make a decision and the prediction. मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को वाइडली यूज कर रहा है फॉर वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन. दीज एप्लीकेशन सच एज द मेडिसिन है, ईमेल है, ईमेल फिल्टरिंग है, स्पीच रिकॉग्निशन है, एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर वर्जन है. So these are very difficult or unfeasible data that are develop conventional algorithm to perform to needed task. आगे क्या है कि machine learning is a scientific study of statistical model algorithm and making prediction using historical data or information. तो machine learning का काम क्या है कि यहाँ पे हम statistical model algorithm के यूज से हम क्या कर रहे हैं, हिस्टोरिकल डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है उनको हम प्रिडिक्शन बना रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं. उसके बाद प्रिडिक्शन करने के बाद वी विल टेक द डिसीजन ऑन दैट. मशीन लर्निंग इज इन्वॉल्व इन अ वेरियस फंक्शनलिटीज लाइक क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्रिडिक्टिव मॉडल. आगे हम क्या करते हैं कि मशीन लर्निंग में हम बहुत तरह के फंक्शंस कर रहे हैं. देयर आर मैनी फंक्शंस आर बीइंग टेकिंग प्लेस. जैसे हमारा क्लस्टरिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, डेवलपमेंट ऑफ द प्रिडिक्टिव मॉडल. Currently, it is being used for the various tasks such as image recognition, speech recognition, email filtering, Facebook auto tagging, recommender system, or many more. Classification of machine learning. So we have broadly three types of classification are being made in a machine learning. First is supervised learning, second is unsupervised, and third is reinforcement. In a supervised learning, we have this type of machine learning in which machine are trained using a well-labeled training data. On the basis of training data, the machine predict the output. The labeled data means some input data is already tagged, which are being used as a correct output. So in a supervised learning, the training data is provided to the machine work under the supervisor that the machine is to predict the output correctly. So how does it work actually? So in supervised learning, the model are trained using the label data set. We can say we have a label data which are in a form of set where the model learn about the each type of data. Once the data process is completed, the model is tested on the basis of test data and we can predict the output here. So we have a two type of supervised machine learning algorithm. First is regression and second is a classification. So in regression algorithm are being used here, it form a relationship between the input variable with the output variable. It is used to prediction of the continuous variable such as the weather forecasting, the market trend, and some more popular things. The regression algorithm comes with the under the supervised learning. So we have linear regression, regression tree, non-linear regressions, okay, the polynomial regression. Now we have a classification. In a classification algorithm, here where the output variable is a category with the means where the two classes like a yes or no, male or female, or true or false form. Like it can be in a form of yes or no, male, female, or true false type. So we can have the example of the classification as a spam filter. So these are type of supervised
learning. Unsupervised learning, machine learning. Well, in unsupervised, what we are actually doing, in a supervised machine learning, which we already had a label data, where the model are being trained by using a label data under the supervision of the training data. But there's many cases where we don't have a label data, and we need to find a hidden pattern from a given data set. So here we are using a unsupervised learning technique for those machine learning cases. So in unsupervised learning, as name based, we come to know that there's a machine learning technique in which the model are not supervised by using a training data set. Instead of that, we have a model itself to find out the hidden pattern and insight from the given data. It can be compared to learning with the take place in a human brain while learning new things. So um, so, what exactly we are doing in a unsupervised learning? We have a unlabeled input data, which means it does not categorized, and corresponding output are not given. Now, the unlabeled input data is fed into machine learning model in order to train that. Firstly, we interpret the raw data into find the hidden pattern from the data. And now what is we are doing? We are going to apply a suitable algorithm such as a k-mean, clustering, decision tree, etc. So what is happening now? After applying the suitable algorithm, the algorithm is now divided into the data object into a group according to similarities and the difference between the object. Now we have a types of unsupervised learning with clustering and the association. So in clustering, what is it is a method in which the objects are clustered so that the object with the most similar similarities remain in a one group, and lesser which have no similarities, they are put into the another group. The cluster analysis find the commonalities between the data object and they categorize them and spot the presence and the absence of their commonalities. Now association is a rule is a unsupervised learning method which is used for finding the relationship between the variable in a large database. It determines the set of the item occurred together in a data set. Association rule are the making in the market strategy, such as the people who buy a bread. There is a group of people who buy a jam bread. Typically, there is a association are being made. Market-based analysis. Reinforcement learning. So reinforcement machine learning, where we are having a feedback based machine learning technique in which the agent learn to behave in an environment by performing an action and seeing the result of action. For each good action, the agent gives a positive feedback. For each bad action, the agent gives a negative feedback or a penalty. In a reinforcement learning, the agent learns automatically using feedback without any label data, unlikely like in a we are used in a supervised learning. Since there is a no label data, so the agent is bound to learn by the experience only. So here we have a you know in a reinforcement learning, we have a specific where the decision making is the goal for the long term, such as a game playing or robotic, etc. So the primary goal of an agent in a reinforcement learning is to improve the performance by getting the maximum positive reward. So, reinforcement learning is a type of machine learning method where the intelligent agent, which has been computer programmed, interact with the environment and learn how to act within it. Now we see like how reinforcement learning works. So we can see that we have a input data. Uh, it consists of the various, the environment and
it consists of the environment and the agent, where the environment can be anything such as a room, maze, a football ground, etc. And agent is being used here, the intelligent agent such as the AI robot. So, as I already told you, like it is a technique where the we are doing a performing an action and seeing the result of the action. The action can be in a form of a good. If it is in a form of good, we get a feedback from that. We get a positive feedback. If it is action is a bad, we get a negative feedback, and or we give it as a penalty. I hope these videos are going to be helpful for your exam. Please like and subscribe my channel. Thank you so much. Student, I hope you like today's video on artificial intelligence and the machine learning. So please like and subscribe if you liked my video. Thank you.